Friends, do you know March 14 is celebrated as Pi Day? मार्च 14 को पाई दिन की तरह मनाया जाता है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं क्यों? आगे प्रश्न आता है कि पाई है क्या? What is pi? Pi is the ratio between circumference and diameter of a circle. Friends, listen to it carefully. Circumference divided by diameter is known as pi. इस अनुपात का वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात का यह नाम पाई अभी 18वीं शताब्दी में ही पड़ा है। उससे पहले इसको पाई करके नहीं जाना जाता था, किंतु सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर के इस अनुपात पर अनेक सभ्यताओं ने बहुत काम किए हैं। Many civilizations have worked on this ratio. Take any circle, smaller or bigger. The ratio of its circumference to its diameter is always a constant. किसी वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट होता है और इसी अनुपात का नाम है पाई। इसका मूल्यांक 3.14 से थोड़ा ज़्यादा एवं 22/7 22/7 से थोड़ा कम होता है। Now you will think what Vedas have to do about this pi. वेदों को पाई से क्या लेना देना है? किंतु दुनिया में संभवतः सर्वप्रथम वेदों को ही वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिकोण आदि की ज्यामिति एवं इनके तुलनात्मक क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ी। इसका कारण वेदों का कर्मकांड है, जिसे आप यज्ञ भी कहते हैं। Vedas were the first to deal with the areas of triangles, squares, rectangles, circles, and even more complicated shapes like shape of a tortoise or a falcon. Vedas recommended various shapes of yajna kundas, and their areas must comply with certain rules, irrespective of the shapes of the kundas. वेदों के हवन कुंड अनेक आकृति में होते थे एवं इनके क्षेत्रफल एक विधान के अनुसार होते थे। यहीं से शिल्प शास्त्र का जन्म हुआ एवं शिल्प शास्त्र के अंतर्गत शुल्ब सूत्र अर्थात ज्यामिति के सूत्रों का आविष्कार हुआ। शुल्ब सूत्र आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रेटाइजेस ऑन ज्योमेट्री। देखिए, बाकी की सभ्यताओं को ज्योमेट्री की तब आवश्यकता पड़ी जब वो बड़े बड़े प्रासाद, किले आदि बनाते थे, किंतु वैदिक सभ्यता में बहुत पहले जंगल में ही यज्ञ करने के लिए, हवन कुंड बनाने के लिए अनेक आकृति और उनके क्षेत्रफल और उनके संबंध आदि की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए कहा जाता है कि मानव सभ्यताओं ने वेद को ही ज्योमेट्री और गणित जैसे गूढ़ विषयों से परिचित कराया। Not only the geometry, it developed the earliest arithmetics, the earliest management of fire and the heat energy, and the earliest treatises on consciousness. इस तरह से वेदों ने सबसे पहले ज्यामिति, मेंसुरेशन, गणित, इरेशनल नंबर्स, ध्यान एवं मनोविज्ञान, अग्नि अथवा ऊष्मा के प्रयोग, ध्वनि अथवा मंत्र के प्रयोग, औषधि एवं रसायन शास्त्र के प्रयोग, चेतना के प्रयोग आदि अनेक प्रयोगों को जन्म दिया। Apart from this, all the various kind of tools and concoctions were developed to accomplish yajnas. From here arose the basics of Vastu Shastra as well, what we call architectural engineering or civil engineering today. इस वेदों के कर्मकांड ने कितनी विज्ञानों को जन्म दिया, उससे आज हम अनभिज्ञ हैं, उसको हम आज भूल गए हैं। वेदों में सोम रस का उपयोग होता था, जो कि एक हर्बल कॉक्शन था। जड़ी बूटियों के अनेक योग, प्रयोग अथवा उनकी कंपोजिशंस
यज्ञ के लिए बनाए जाते थे। हवन सामग्री स्वयं में ही एक हर्बल कंपोजिशन होता था। अतः यज्ञों से सर्वप्रथम रसायन एवं आयुर्वेद जैसे शास्त्रों की नींव भी मानव सभ्यता में रखी गई। यह भी एक कर्म कांड का ही एक फल था। Seeing the uses of tools and herbs in yagnas, it is not surprising that earliest medical and surgery sciences were developed in India. Not only these medical and surgery sciences were developed, they also culminated to charak and susrit sanyatas. So the tools of yagyas helped to develop the tools for surgery as well. Thus, human civilization is indebted for Vedic yajnas and Vedic कर्मकांड। वैदिक कर्मकांडों की मानव सभ्यता एक तरह से ऋणी है और उनका उपहास उड़ाना गलत है। Thus, so far I have mentioned or listed some 11 sciences that took birth from yagnas or the very karmkand of Vedas. Now, let us come back to geometry and arithmetics of Shilpa Sutras or Shulba Sutras. The manuscripts are the proof that Vedic rishis, especially the experts of yagnas, discovered or they knew the following facts, theorems. बोधायन एवं कात्यायन आदि के शुल्ब सूत्रों से ये पता चलता है कि जो वैदिक ऋषि थे वो ज्यामिति एवं गणित की अनेक तथ्य या उनकी थ्योरम्स को जानते थे। नंबर 1, वो जानते थे कि वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात कांस्टेंट होता है। 2, in Shulba Sutras, the ratio of circumference and diameter is mentioned to be about 3. They knew how to square a circle or circle a square so that their areas are same within the accuracy of 1%. They discovered so-called Pythagoras theorem thousands of years before Pythagoras himself. They discovered the irrational numbers like root 2, root 3 and root 5 and also calculated their values up to 5 decimal places. They understood irrational numbers never terminate and used series of fractions or rational numbers to find their values to many decimal places. Irrational number जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनकी 5वें दशमलव तक वैल्यू निकालना आश्चर्य की बात थी। Shulba Sutras of Bodhayan and Katyayan became experts in representing irrational numbers in terms of series of rational fractions. Shulba Sutras were the first to develop the summation series, and they did realize that infinite series can add to a finite irrational number. Shulba Sutras provided the first geometric construction methodology by using ropes, sticks, and nails to form as compass and scales. They knew the theorem that diagonals of a square or a rhombus are perpendicular on each other. Thus, Shulba Sutras were the first to develop the theorems of geometry. While squaring a circle or circling a square, Vedic rishis have used values of pi near to 3. In some of the formulations, to simplify the construction problem, they use 3.088 as pi, and at other places they have also used 3.165 as pi. They could see by using large circle and threads that one length of diameter is repeated along the circumference. It goes 3 times, leaving about 1/7 of the diameter to still to fit.
This provides the today's famous approximation of pi equals 3 plus 1 over 7 or equals to 22 upon 7, which is near 3.14. Thus they knew this ratio called pi is an irrational number like root 2, and it requires more terms to be added into the series for its precise value. Later on, Archimedes in about 250 BC finds out the limits of pi without associating any value to it. Eventually, the famous Indian mathematician Aryabhatta in about 4th AD provides the value of pi to 5 decimal places. Here it must be noted that the value of pi to such an accuracy cannot depend on any measurement. Therefore, the Vedic rishis and Indian mathematician like Aryabhatta, they had access to some infinite series and mentioned a value of pi to the accuracy required at that time. That in case of Aryabhatta, he calculates to 5 places from some series. These decimal places accuracy commensurates with his trigonometric values he derived for sine and cosine of an angle. So he was accessing some kind of series to find out the values of sine and pi to 5 decimal places. Thus, Vedic literature led to the earliest trigonometry as well. साथियों, आर्यभट्ट ने 5 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू एवं 5 और शायद इससे भी अधिक डेसिमल प्लेसेस तक साइन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की ये किसी सीरीज से ही कैलकुलेट की थी. Other contemporary mathematicians, Indian mathematicians like Bhaskar and Nilkant, also had access to some kind of series to calculate the values of pi, and they did improve it. Later on, finally, in 13th century, the Indian mathematician Madhava provided the full infinite series to compute pi to any accuracy, and this ended the evolution of pi. So my friends, you see, India started the discovery of pi and ended its evolution. It went through so many mathematicians from Vedic period to Madhava of 13th century. This is the short story of evolution of pi under Indian mathematics. But did you also not notice, my friends? Did you also not learn that how Karmakand of Vedas gave rise to originated various sciences that were further developed and sophisticated in the Vedic literature itself? वेदों की यज्ञ अथवा कर्मकांड ने कैसी कैसी विज्ञानों को जन्म दिया एवं वैदिक साहित्य ने इनको और भी विकसित किया. साथियों, मैंने जहां जहां शिल्प सूत्र या शिल्प शास्त्र का प्रयोग किया है वहां पर आप कल्प सूत्र या कल्प शास्त्र समझें, क्योंकि जो शुल्ब सूत्र हैं वो कल्प सूत्र का ही हिस्सा हैं, उसी का अंग हैं. मानव जगत को छंद व संगीत भी यज्ञों के उद्गीत की देन है. सामवेद में गायन के नियमों का पहली बार प्रयोग हुआ. हम इसी के साथ अपने इस डिस्कोर्स को समाप्त करते हैं. आपको पाई के बहाने बहुत कुछ जानने को मिला है और वेदों के कर्मकांड के महत्व को भी आपने समझा है. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें.